Nutrition in animal. We learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repairing, and functioning of the body. Animals nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. You have studied in lesson that food consists of many components. Try to recall and it lists below. List them below. This components of food such as carbohydrate are components of food such as carbohydrates are complex substances that complex substances cannot be utilized as such. So they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. Different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds, hummingbird. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on the mother's milk. Snakes like the python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. What is activity food and nutrition feed of the following animals? Write down your observation in the given tables. Many other forms of feeding will helpful. Snail eat, hummingbird lays, mosquito, butterfly. Amazing facts: starfish feeds on animals covered by the hard shell of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. Slowly digested. Calcium carbonate. Calcium carbonate. Starfish covers digestion in humans. We take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused parts of the food are defected. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus.
begins buccal cavity and ends the anus में खत्म होता है. The canal can be divided into various compartments and of the rectum. And it is not a very long path. These parts together form the elementary digestive tract. The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. The inner walls of the stomach and the small intestine and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juice. So the salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juice. The digestive juice convert complex substance food into smaller ones. The digestive tracts and the associated glands together constitute the digestive system. Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. The mouth and buccal cavity. Food is intake body through the mouth. The process of taking food into milk teeth and permanent teeth. Do you remember about falling of your teeth some years ago? The first set of teeth grows during infancy, and they fall off at the age between 6 to 8 years. Fall off the age of 6 year and 8 years. 6 years से 8 year के बीच में. These are termed milk teeth. उसको मिल्क टीथ कहते हैं. तो 6 साल और 8 साल के बीच में गिरता है. The second set that replaces them are the permanent teeth. रिप्लेस होकर जो टीथ बनता है सेकेंड टाइम में उसको परमानेंट टीथ कहते हैं. परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ during old age due to the dental disease. ओल्ड एज में जो गिरता है दांत वो डेंटल डिजीज की वजह से. Bujos is fascinated by the highly coiled small intestine in molar, premolar, canine incisor. दो इधर 4 मोलर, 3 इधर 6 मोलर. ऐसे प्रीमोलर 2 4 प्रीमोलर, एक इधर 2 कैनाइन इंसीजर 1 2 2 4 इंसीजर. The body is called intestine. ये हो गया है. Which one is for pulsing and tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding. Course observation.
boiled rice in test tube in the drops the thin drops of iodine solution is the observer while there is change the color test tube discuss result to your classmate teacher saliva breakdown into starch into sugar saliva breakdown the starch into sugar. The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions. Do you know the functions of the tongue? We use our tongue for taking. Besides, it mixed saliva with the food during chewing and help in swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different tastes of food. We can find out sweet and tooth decay. Normally, bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and the mouth after eating, many harmful bacteria also begins live and grow. These bacteria break down sugar present from the leftover food and release acids. To know what an acid is, the acids gradually damage the teeth. This is called tooth decay. If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases result in both loss. Chocolates, sweets, soft drinks, and other sugar products are the major culprits to of tooth decay. Therefore, once someone some when the eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may through get hiccups or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. The windpipe carries air from the nostril to the lungs. It runs adjusted to the food pipe, but inside the throat, air, the food cell, and common passes. The half food prevented from entering the windpipe during the eat of swallowing the flap-like valve close the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we will feel choked, get hiccups. Position of taste buds following activities below simple sugar solution, common solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf or butter ground. Simple but is different areas tongue as you cigarette more light than other center review the activity. Food pan and also focus. The swollen food passes in and stomach. And the chest food is
pushed down the movement of the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomiting after eating and think of the reason. Like it is the widest part of the alimentary canal. Widest part. Flattened gel shaped like structure. Thick माने मोटा वाल होता है. Thick मोटा walled bag. Alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid, and digestive juice. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria after enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juice to act. The digestive juice break down the protein है ना प्रोटीन डाइजेस्टिव जूस जो है ब्रेक डाउन होता है किसमें प्रोटीन में इनटू सिंपलर सब्सटेंस है ना digestive juice break down the protein simpler substance. The small intestine is highly coiled and about 7.5 meters long. Small intestine जो है highly coiled 7.5 meter long होता है. It receives secretion from the liver and the pancreas. Besides, its walls also secretes juice. The liver is a reddish-brown gland situated in the upper parts of the abdomen on the right side. Liver जो है gland situated upper part of the abdomen का upper part के right side में होता है liver. It takes largest gland in the body. मतलब ये liver जो है largest gland in our body. ये secrete क्या करता है? Bile juice का secrete करता है. That is stored in a sac called the gallbladder. है ना. और स्टोर कहाँ होता है बाइल जो स्टोर किस में होता है गॉल ब्लैडर में. The bile plays an important role in the digestion of fats. मतलब बाइल जूस जो है फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats, and proteins and changes them into simpler forms. अब इसमें कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या है. The working of the stomach was discovered by a strange accident in 1822. The man named Alexis St. Martin was badly hit by a shotgun. Alexis St. Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in the stomach. He was brought to an American army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly.
डू नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, मतलब होल जो है, जो गोली लगा था वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ। लेफ्ट इट बैंगेड। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observations. Beaumont found that the stomach was churning food. The wall secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. इसमें मोटा मोटी याद रखना है कि एक बेड लिस्ट एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एलेक्स एस.टी. मार्टिन को जो है एक शॉट गन लगा था, जिसके सीने में, चेस्ट में जो एक होल हो गया था। उसका आर्मी डॉक्टर ने उस होल को मतलब ठीक करने की कोशिश किया था। विलियम बियोमॉन्ट डॉक्टर का नाम है, और जिसको गोली लगा एलेक्सिस एस.टी. मार्टिन। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है। हाँ, तो partially digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of food components of the food. The carbohydrate gets break down into simple sugar. कार्बोहाइड्रेट जो है broken into simple sugar such as glucose, fats into the fatty acid, and glycerol, and proteins into amino acid. Protein amino acid. Carbohydrate get broken into simple sugar such as glucose, फैट जो है टूटता है फैटी एसिड में, एंड ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन टूटता है किसमें, अमीनो एसिड में। Absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, उसको विलाई कहता है। सिंगुलर में उसको विल्लस कहता है। विल्लर्स भी कहते हैं, विलाई को विल्लस भी कहते हैं। कैन यू सी गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी in the intestine? The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body, where they are used to build complex substances such as the protein required by the body. This is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed
enters into the large intestine. Large intestine. The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. Its function is to absorb water. इसका फंक्शन मेन फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का? एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड सम सॉल्ट्स फॉर्म द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. हेलो मीता नंदा, बताइए. क्या पूछना है, बोलिए. Its function is to absorb water. मीता नंदा, बताइए. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. The remaining waste passes into the rectum and remains there is semi-solid phases. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called ingestion. Digestion in grass eating animals. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग, जो ग्रास वगैरह खाता है उसके बारे में बताया गया है. हैव यू ऑब्जर्व cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach. Child rumen. Here the food gets partially digested and is called curd, but later the curd returns to the mouth in small lumps and the animal chews it. This process is called rumination. And these animals are called ruminants. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc. Bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. Animals like horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure called cecum. क्या? एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट, लार्ज सैक स्ट्रक्चर है ना. लार्ज सैक स्ट्रक्चर जो है उसको सीकम कहता है. बिटवीन द ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. और ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच होता है. द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ
certain bacteria which are not present in humans. So far you have learned about animals which possess the digestive animals, but there are many small organisms which do not have a small mouth, have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. Feeding and digestion in amoeba. Amoeba, most important. Amoeba is a single microscopic single called organism found in pond water. अमीबा जो है माइक्रोस्कोपिक होता है और सिंगल होता है, कॉल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, और पॉन्ड वाटर में पाया जाता है. अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, है ना. अमीबा के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है. ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, है ना. मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होता है इन इट्स cytoplasm. Amoeba consistently changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia, है ना. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको क्या कहता है, स्यूडोपोडिया कहता है. और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. फॉल्स फीट उसको क्या कहता है, फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट के लिए फॉल्स फीट होता है, एंड कैप्चर ऑफ फूड, और वह फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है. स्यूडोपोडिया की मदद से क्या करता है, वो फूड को कैप्चर करता है. ये इम्पोर्टेंट है. न्यूक्लियस उसमें अमीबा का फिगर है. न्यूक्लियस है स्यूडोपोडिया. फूड पार्टिकल्स इंजेक्शन, फूड वैक्यूल होता है. इंजेस्टेड वेस्ट भी निकलता है इसमें. Amoeba feeds on some microscopic organisms. When it sends food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and it break it down into simpler substances. Gradually, the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance, and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. In a later chapter, you learned about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. अब ये तो ख़त्म हो गया. देखते हैं इसका कुछ टिप. एब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड, अमीबा, एसिमिलेशन, बाइल जूस कौन बनाता है, लीवर बनाता है बाइल जूस. और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में. बक्कल कैविटी, कार्बोहाइड्रेट का जो है क्या होता है, स्टार्ट होता है डाइजेशन. केनाइन, सेलुलोज किसमें होता है, प्लांट में. सेलुलोज डाइजेशन, इंजेक्शन. फैटी एसिड, फूड वैक्यूल, गॉल ब्लैडर, इसी में जो है बाइल जूस स्टोर रहता है. ग्लिसरोल, इंसिजर, इंजेक्शन, लीवर, है ना. मिल्क टीथ, मोलर, परमानेंट टीथ, ओसोफेगस, पेनक्रियास, प्रीमोलर. स्यूडोपोडिया किसमें होता है, स्यूडोपोडिया अमीबा में. ल्यूमेन,
जानवर में होता है, काव, बफेलो में रूमिनेंट, रूमिनेशन, सेलेवरी ग्लैंड, सलेवा, सेलेवरी ग्लैंड, बिलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सलेवा। हेलो अर्चना। अपने दंगल बैच नहीं, हम दंगल बैच नहीं लिए हैं। दंगल बैच नहीं लिए हैं। रिवीजन तो हो नहीं पा रहा है, कितना बैच लेंगे, पढ़ेंगे। मेन रिवीजन है ना। रिवीजन वही सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग किया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी को जितना बार आप पढ़ेंगे उतना बार कुछ नया चीज़ आपको मिलेगा। इसलिए एनसीईआरटी को बार बार कम से कम जो है 10th तक, 7, 8, 9, 10, ये 4 क्लास तो आपको पढ़ना ही होगा। हाँ, वो दंगल बैच में करा रही है, वो समझ रहे हैं, मगर हम अभी नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी हमको रिवीजन करना है, इसीलिए नहीं लिए हैं। हाँ, अभ्यास बैच में पढ़ा रही है, अभ्यास बैच लिए हैं। अभ्यास बैच में मैम पढ़ा रही है, मगर बहुत वो शॉर्ट में पढ़ा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि जितना भी इसमें छूटा हुआ चीज़ें हैं उसको अभी कवर हो सके। मैम तो बस मेन पॉइंट्स लेके पढ़ाई है। 40 मार्क्स का तो अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो साइंस पे मेरा फोकस है। अभी नोटिफिकेशन का भी कोई ये नहीं है, तो इसीलिए 40 मार्क्स का कम से कम पहले मेन अपना पेपर तो कम से कम स्ट्रॉन्ग कर लें, तो ज़्यादा फोकस मेरा तो अभी साइंस पे है। बाकी उसका करेंगे स्टार्ट बहुत जल्द। INM हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये सब भी होगा धीरे धीरे। बाकी अभी मेरा फोकस अभी साइंस पे है, क्योंकि साइंस हमको स्ट्रॉन्ग करना है थोड़ा। एग्ज़ाम का तो कोई अता पता नहीं है ना। तो बाकी एग्ज़ाम जब भी हो तो हम लोग को तो तैयार रहना है ना। एग्ज़ाम तो आज निकल लेगा ही लेगा, हम लोग एग्ज़ाम के भरोसे बैठ नहीं सकते ना। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि तैयारी करके पूरा स्ट्रॉन्ग रहें, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो उसमें बैठें तो हम लोग क्वालिफाइड हों। ये ना कि हम लोग इंतज़ार में रहें कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग को अभी से ही तैयारी अच्छे से करना है, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए, एग्ज़ाम हो, तो हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें उसमें। बाकी देखिए कब तक होता है एग्ज़ाम। आप कहाँ बिहार से हैं क्या? हाँ, 35% जो आरक्षण जो बाहर वाले को, मतलब बिहार से बाहर जो थे उन सबको भी मिल रहा था, जितने भी गर्ल्स थे बाहर के, जैसे यूपी, अदर स्टेट के, तो वो सबको मिल रहा था। तो वही चीज़ हटा दिया है सरकार ने। अब जो वो 35% का जो आरक्षण है वो सिर्फ बिहार के लड़कियों को मिलेगा, बाहर वाले को इसका लाभ नहीं मिलेगा। वो लोग अब जनरल से फाइट करेंगे। देखिए कट ऑफ तो वो तो इस पे डिपेंड करता है ना। कट ऑफ तो
क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है। अगर इजी लेवल का पूछेगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, अगर हार्ड लेवल का पूछेगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा। तो उसका अभी नहीं सोचना है कि कट ऑफ कितना जाए, कट ऑफ जितना भी जाए, है ना। हम कट ऑफ के बारे में अभी नहीं सोचना है, एग्ज़ाम वगैरह दे दीजिए, उसके बाद ना कट ऑफ का ये हो एनालिसिस होगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्वेश्चन का लेवल क्या है, उस हिसाब से कट ऑफ का डिसीजन होता है। हाँ, कुछ तो कम होगा, इतना जितना मान लीजिए 75 आता था पहले टीआरई 3 टीआरई 2 में, मान लीजिए नंबर आता था, तो उससे कुछ कम होगा। ऐसा नहीं है, इसका लाभ आप लोग को मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाना है। क्यों मतलब उसका चक्कर में पड़ेंगे कि इतना ही रहे कट ऑफ के, इसमें ही रही। हम लोग को तैयारी इस लेवल का करना है कि हम लोग जनरल में आ जाएं, ताकि जो मैम के बुक कैसे हैं, मैम का कौन, ये नया वाला प्रैक्टिस बैच एमसीक्यू बुक के बारे में पूछ रहे हैं क्या? अगर एमसीक्यू बुक के बारे में पूछ रहे हैं तो सही है बुक, है ना, सही है, देखा जाए तो सही है। उसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ अच्छा खासा, और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ अच्छा से। रिवीजन के ट्रिक ये ठीक है कि जैसे सेल टॉपिक है 5 वीडियो, तो उसको देखे फिर याद किए, फिर बिना देखे कॉपी में लिख के फिर टेस्ट दिए, सही बात है। हाँ, मैम तो बार बार शुरू से ही बता रही है कि याद नहीं होता है तो उसको लिख लिख के रिवीजन करने के लिए बता रही है। तो अच्छा कर रहे हैं आप, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद नोट्स अगर बनाए तो नोट्स देख के आप भी उसको कॉपी में लिख सकते हैं एक बार, उसके बाद फिर कॉपी बंद करके फिर उसको लिख सकते हैं जो जो जितना याद है। ये नहीं कि अब मान लीजिए 10 टॉप चीज़ याद किए तो 10 में मान लीजिए 10 पूरा याद नहीं रहेगा ना, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, तो उस तरह से याद आते जाएगा। फिर जब जो भूल गए उसको फिर देख लेना है, अच्छा क्या है, फिर इस तरह से करेंगे तो यह होगा ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और कन्फ्यूज़न होने के चांस कम रहेंगे। लिख लिख के तो सही तरीका है, क्योंकि लिखेंगे फिर पढ़ेंगे सोचेंगे तो इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। मैम तो बार बार बताती क्लास में शुरू से ही। मेन रिवीजन करना है, रिवीजन आप जितना करेंगे उतना याद होगा, उतना आप बेहतर करते जाएंगे। रिवीजन है क्लास के सारे टेस्ट के क्लास के सारे क्वेश्चन और टेस्ट के सारे क्वेश्चन वो। अच्छा, कौन अर्जुन 5 में है क्या या अर्जुन 4 में? अच्छा, अर्जुन 3 में। अर्जुन 3 में तो हम भी हैं, तो वो तो पहले ही ख़त्म हो गया ना। हाँ, टेलीग्राम ये दिया हुआ है, उस पर लिंक दिया हुआ, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं।
फिजिक्स भी ख़त्म हो गया, लगभग सारा ख़त्म हो गया। वो तो कुछ टॉपिक जो बचा हुआ है, कुछ कुछ टॉपिक मैम लाती हैं, पढ़ाती हैं, 1-2 क्लास में ख़त्म कर देते हैं। हाँ, रिवीजन बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। हाँ, रिवीजन करना ही है ना। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं कीजिए। मॉक टेस्ट भी लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, उसको एनालिसिस कीजिए किसमें गलती हो रहा है। सही कर रहे हैं। यही जो नाम से चैनल है वही नाम से ये है, उसमें QR कोड दिया हुआ है, उससे स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो बस जो मेरा चैनल का नाम है वही नाम सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा उसमें। जिस जैसे आपको सही लगे अच्छे से बस रिवीजन करना है हम लोग को। बस ये हेलो। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently. This condition, diarrhea. It may be caused by an infection, food poisoning, or ingestion. It is very common in India, but particularly among children. Under such conditions, it can be fatal. It is because excessive loss to water from body. Diarrhea should not be neglected even before a doctor consulted the patient with the presented boiled and cold water to sugar dissolve of the oral hydration of the solution. चलिए आज दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो हम लोग अब तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स जो है, सिलेबा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सिलेबा ब्रेक डाउन the starch into sugar. The tongue is a flexi-muscular organ. This helps mix saliva with the food during chewing and helps in the swallowing food. It also tastes food with our tongue. It has taste buds that detect different tastes of food. Esophagus, buccal, salivary gland, liver, gallbladder, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, rectum, anus, buccal cavity, food pipe, or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus, digestive system. सब 6 से 8 ईयर्स में जो गिरता है मिल्क टीथ 6
6 से 8 ईयर में गिरता है। रिप्लेस द, और उसके बाद जो सेकंड टाइम जो रिप्लेस होता है उसको परमानेंट टीथ कहता है। और जो ओल्ड एज में गिरता है उसको डेंटल केरीज की वजह से उसका दांत गिरता है। और उसमें और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है इम्पोर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, है ना। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज में टूटता है कार्बोहाइड्रेट। फैट टूटता है फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन अमीनो एसिड में। ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरा 2 बार अटक, इस बार चाहते हैं कि हो जाए। हम बिहार से ही हैं जी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इस बार TRE 4 जो है होना है, बस ईमानदारी से अपना तैयारी करना है ना। जो गलती पहले हो चुका है उस गलती को देखना है, उस गलती को सुधार के हमको अच्छे से तैयारी करना हम लोग को, है ना। इसलिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। NCERT में बहुत ऐसा चीज़ है, पढ़ने से आपको जो है एक जो है कॉन्फिडेंस आएगा, समझे। इसीलिए हम जो है NCERT समझ में आए ना आए बस रीडिंग करते जाना है। एक बार रीडिंग करेंगे फिर दूसरा बार रीडिंग करेंगे, जब तक समझ में ना आए रीडिंग करते रहेंगे। NCERT को नहीं छोड़ना है।